Hello everyone. Today we will study magnetic field, magnetic lines of force and their characteristics, Warshawert's law, which is used for the determination of magnetic field at a point. First we start with the magnetic field. Magnetic field is a region or area around a magnet, magnetic object, or around a current carrying conductor in which an influence of magnetic force is experienced. आप सबने मैग्नेट देखा है. Magnet that have a two pole always exist in pair, that is one pole is north, second is south, and magnet is a material or a substance which attract another material or substance then brings near to it. जो आपका मैग्नेट है उसके रीजन में अगर कोई भी दूसरा मटेरियल आएगा तो वो उसको या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है. तो जो रीजन जहां तक वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, उस रीजन को रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. और स्टड फाउंड फर्स्ट टाइम that a magnetic field is established around a current carrying conductor, and magnetic field exists as long as there is a current in the wire or the conductor. The direction of magnetic field was found to be changed when direction of current was reversed. Magnetic field is measured by its strength or by the direction it points. और एस्टर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि अगर कंडक्टर में करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन जो है वो जनरेट हो जाएगा. तो नाउ आई एम शोइंग यू हियर अ डायग्राम दैट इज अ कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन एंड दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो आप रिंग देख रहे हैं इसके सराउंडिंग में, दैट इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is depend on direction of current. In the second, the direction of current is reversed. ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ रहे हैं. डिफरेंस दोनों में क्या है? पहले वाले में जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरे में जब अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन है करंट की तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज है. तो दैट इज द region of magnetic field around a conductor, first time discovered by Orestes. Units of magnetic field. In SI, magnetic field is measured in Tesla. We know that magnetic flux, magnetic line of force, crosses or passes through an area, is mathematically represented by the dot product of magnetic field and area vector. Magnetic flux is equal to V dot A, B for magnetic field, A for area vector. When we solve the dot product, we use cos theta, that is BA cos theta. If the angle between the magnetic field and area vector is 0, mean they are directed in the same direction, then cos 0 is equal to a 1, and when cos theta is equal to a 1, then flux is equal to VA. B is equal to जो magnetic field है B, that is equal to flux upon area. Flux in SI measured in Weber and area in meter. So therefore 1 Tesla is equal to 1 Weber per meter square. That is the unit used for the measurement of magnetic field. Come to the magnetic lines of force. The region of magnetic field is represented by these magnetic lines of force. Magnetic lines of force is an imaginary line. Imaginary mean they are not real. Imagine की जाती हैं वो lines. Magnetic line of force is an imaginary line representing the direction of magnetic field such that the tangent at any point is the direction of magnetic field vector at that point.
It describe the phenomena related to the magnet. जो इमेजिनरी लाइंस मैग्नेट के सराउंडिंग में हम ड्रॉ करेंगे, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है इसकी जो सराउंडिंग में ये लाइंस देख रहे हो आप जिनके ऊपर एरो लगे हुए हैं, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और ये प्रॉपर्टीज को शो करेंगी मैग्नेट की। Characteristics. First characteristic of these magnetic lines of force, they are closed continuous curve. Mean outside the magnetic line of forces, they are continuous. Closed curve form करेंगी that emerges from north pole and enter at south pole. Inside the magnet, these lines are directed from south to north. But that mean मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इमर्ज होंगी नॉर्थ पोल से, आउटसाइड द मैग्नेट कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगी और साउथ पोल पे खत्म हो जाएंगी। और इनसाइड ये देखिए यहां से नॉर्थ से शुरू हो रही हैं, डायरेक्शन ऑफ एरो डायरेक्शन बता रहा है, साउथ पे खत्म होंगी। दीज आर द कॉन्सेंट्रिक कर्व्स सर्कल्स फॉर्म्ड आउटसाइड द मैग्नेट. They are emerges from north in this direction and entered from the south. Inside the magnet, they are directed from south to north. Remember, opposite to that outside the magnet. Come to the second property. The direction of magnetic field at any point is along the tangent to the magnetic line of force passing through that point. अगर हम magnetic field find out करना चाहें, direction क्या है, तो नाउ वी पिक अ पॉइंट ऑन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर एग्जिस्ट टू टेंजेंट एट अ पॉइंट and two tangent at a point not possible. तो सो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। Crowdness, next property, crowdness of magnetic line of force in a region is a measure of magnetic field strength in that region. More is the crowdness, stronger is the field. अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा होंगी तो फील्ड ज्यादा होगी, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम है तो फील्ड कम होगी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिटवीन टू अनलाइक पोल्स contract longitudinally. Longitudinally mean along the length axis. अगर हम दो पोल लें, वन इज नॉर्थ सेकंड इज साउथ, तो हमने पहले पढ़ा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इमर्ज होंगी नॉर्थ से और कहाँ पे एंड होंगी, साउथ पे। तो ये जो बाहर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो भी कहाँ आएंगी, दैट इज दे प्रेफर टू कम इनसाइड द मैग्नेट। तो सो इनका जो रीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक्सिस के अलोंग लॉन्गिट्यूडनली। द मैग्नेटिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, magnetic line of force between two like pole widen laterally. Laterally mean कि जब भी हम दो नॉर्थ पोल दो साउथ पोल एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल करेंगे और रिपेल करने की वजह से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है एक्सिस के परपेंडिकुलर, उनका जो एरिया है वो वाइडन हो जाएगा, साइड वे they go sideway. So that is the next property. Magnetic line of force can pass through iron more easily than air. The density of magnetic line of force decreases when they move from an area of higher permeability to an area of lower permeability. Permeability, that is the property of the medium through which these lines pass. Density of magnetic line of force decreases with increasing distance from the pole. अगर पोल के पास हैं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा होंगी और जैसे ही पोल से दूर जाते जाएंगे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, उनका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज वायर्ड-सेवर्स लॉ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। Wyatt and Seward, they are the two scientists
in the year 1820 gave a law which is used to determine the magnetic field at a point due to current carrying conductor. This law, although for a very small conductors, but can be used for large conductors. In order to understand the Wyatt-Savart law, we need first to understand the term current element. What is current element? Current element is the product of current and length of a very small segment of current carrying wire or conductor. The current element is taken as a vector quantity and its direction is same as that of direction of current. Product of that current and small length element. This is a conductor XY having length L. Then smaller portion, that is shown by these two marks. This smaller portion of this conductor XY, that is the small element, and current flowing through that conductor is I, remain same in the small element. So current element is IDL. P is the field point where we want to find out the magnetic field due to that current carrying conductor. Theta is the angle that is formed by this position vector from the center of the current element, and the separation from field point and this current element is R vector. Through observation and calculation, Wyatt and Savart derived a mathematical expression which shows the magnetic flux density, and according to these, first, directly proportional to length of the element dl, dB directly proportional to dl. Second, the current flowing through the conductor. Third, sine of the angle between the current element and the field point, inversely proportional to the square of the distance of the given point from the current element. Mathematically, if we connect these, dV is proportional to IDL sin theta upon R square. And when we remove this proportionality sign, we use K, that is dV is equal to K IDL sin theta upon R square. Here K is constant of proportionality depending upon the magnetic properties of the medium and system of unit employed. In SI system, K is equal to mu naught upon 4 pi. Here mu naught is absolute permeability of air or vacuum. As I already told, permeability means property of the medium. If that medium allow the passage of magnetic line of forces easily or not. And its value in air or in vacuum is 4 pi into 10 to the power minus 7 Weber per ampere meter. If we substitute the value of K, this magnetic field or induction at point P due to small element dV is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon R square. And in vector form, this magnetic field at a point due to small element dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross n cap. N cap represent the unit vector, that is direction of magnetic line of force upon R square. So this is the Wyatt-Savart's law, which is used for the determination of magnetic field at a point given by Wyatt and Savart.